Hello everyone. In this segment we shall discuss about memory organization and the operations performed. So whenever we'll come across the term called as memory, its definition is nothing but which stores data or information. अब देखिए अगर डेटा स्टोर करना है या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो हमें दो एलिमेंट्स लगेंगे. एक तो एड्रेस लाइंस जिसको हम लोकेशंस कह सकते हैं वेयर द डेटा कैन बी स्टोर्ड, और सेकंड वन है इंफॉर्मेशन या फिर उसको हम कहेंगे डेटा जो हमें स्टोर करना है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ 0 1. Okay, so whenever we are dealing with the memory organization, the very first step comes with what will be the typical diagram of our memory. So the typical diagram of memory will be denoted by 2 raised to k by n, where this k indicates number of address lines and this n indicates number of data lines. Most important term. So a general block diagram of any memory element would be 2 raised to k by n, where k are the address lines and n will be the data lines. Now जब हम डेटा लाइंस की बात करते हैं तो डेटा टू टाइप्स का हो सकता है. एक तो इनपुट हो सकता है या फिर आउटपुट हो सकता है. सो आई कैन गेट आइदर डेटा इनपुट or we need output data. This will be the type of data. Now input data is required to write the data, यानी कि डेटा अगर हमें इंसर्ट करना है मेमोरी में तो उसको हम लिखेंगे राइट ऑपरेशन से, और अगर डेटा रीड करना है सो विल गो फॉर डेटा आउट ऑपरेशन. ओके, सो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट address lines, data lines, write and read operation. So based on these elements we can fetch memory organization. For that case, let us assume that we have a memory element of size 32 by 4. Typically we are considering we have a memory element whose capacity or size is 32 by 4. तो इस वाले इसको हमें डिज़ाइन करना है. तो सबसे पहले तो हम फेच करेंगे address lines and data lines. So for that case we'll use this formula 2 raised to k by n is equal to 32 by 4. Now when I compare these two equations with each other, so first of all I need to convert 32 in the form of 2. So we'll write 2 raised to k by n is equal to 2 raised to 5 by 4. Okay, how it comes? So always remember these terms. 2 raised to 0 1 होता है, 2 raised to 1 2, 2 square will be 4, next 2 cube 8, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64, 2 raised to 7 128 and so on. Okay, so these elements are required. Again if I write up to this, 2 raised to 8 will be 256, 2 raised to 9 512 and 2 raised to 10 will be 1024. So now if you compare both LHS with RHS, so if you see we'll get k is equal to 5, that means 5 address lines are required, and n is equal to 4. So we need 5 address lines and 4 data lines. So based on that we will draw a simple schematic of our memory element. So for that case this is our memory element with size 32 by 4. So first I will be writing the address lines. So we have 5 address lines. We'll write them as A0, A1, A2, A3 and A4. ये हो गया हमारा address lines. Now we need 4 data lines. So data lines can be input and output. So based on that we'll first draw the input data lines. This is I3, I2, I1, I0. They are nothing but
data input lines, and we'll take the output lines also. So for that case, again we'll use O3, O2, O1, O0, that is nothing but output data lines. इसको हम लिखेंगे डेटा आउटपुट. ओके, तो ये हो गया एड्रेस लाइन का. दिस इज एड्रेस इनपुट, दिस इज डेटा इनपुट, दिस इज डेटा आउटपुट. नो, अब इस वाले मेमोरी में एक तो डेटा हमें रीड करना है या फिर राइट करना है. फॉर दैट केस वी नीड रीड ऑब्लिक राइट बार ऑपरेशन. अब ये किस तरह से वर्क करता है तो देखिए, रीड ऑब्लिक राइट बार. नाउ whenever it is 0, yes, so we will get read 0 or a complementary यानी 1. So whenever read oblique write bar is 0, so here a write operation is performed, and whenever read oblique write bar is 1, तो read is equal to 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0. So in this case read ऑपरेशन विल बी परफॉर्म. तो ये दो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, आइदर डेटा रीड करना है या फिर डेटा राइट करना है. फाइनली मेमोरी एलिमेंट को इनेबल करने के लिए हम एक कंट्रोल सिग्नल यूज करेंगे, इसको हम कहते हैं मेमोरी इनेबल. ओके, नाउ व्हाट इट डज, इट एक्ट्स एज ए कंट्रोल सिग्नल. सो इन दिस केस इफ इट इज 1, then only data can be write or it can be read. So this will be our diagram of 32 by 4 memory size, or we are performing two operations, one is write and one is read operation. और ये वाला जो है वो एड्रेस इनपुट है जहाँ से हम लोकेशंस डिसाइड कर सकते हैं. सो वी आर हैविंग 5 एड्रेस लाइन्स. So this will be the simple concept of how memories are organized and how the operations are performed. Thank you.